motions and time. फर्स्ट हमारा आता है फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है फर्स्ट an object is said to be at the rest if it dash dash change its position with time. इसका आंसर है does not. The SI units of time is dash dash. इसका आंसर है सेकंड. थर्ड, a child sitting in a revolving giant wheel is an example of a dash dash circular motion. A car moving on a busy Strangely road is an example of dash dash motion, linear motion. Question number 5. The speedometer of a motorbike measure its speed is dash dash. Kilometer and per hour. Next, the speed of fastest moving train is usually measured in meter per hour. False. The average speed remaining constant for an object have a uniform motion. True. A man walks for 1 minute at a speed of 1 second along a straight track. The total distance covered by him is 1 meter. 1 meter is false. तो ये 1 सेकेंड में 1 मीटर होता है, तो 2 सेकेंड में 2, तो इसका 1 मिनट में इसका 100 मीटर होना चाहिए, 60 मीटर होना चाहिए, 60 मीटर. And 4. An object moving along a straight line is said to be in a uniform motion if the curves regularly increase distance in equal intervals of time. Is false. The time period of a simple pendulum that takes 42 seconds to complete 20 score equally 2.1 seconds. True. तो इसका ट्रू कैसे होगा बोलते हैं हम. The distance time graph for a car kit placed on a side road is a straight line parallelly to the time axis. Next. Tick the correct option. Out of the following, only correct formulas is distance is speed multiplied by time. Distance is equal to speed multiplied by time. ये correct है. A man walked on a straight road from his home to the market 3 kilometers away with a speed 6 km per hour. The time taken by the man to go from his home to make equally is 30 मीटर. ये 30 मीटर कैसे होगा मैं बोलता हूँ. मैन है एक इंसान 3 किलोमीटर दूर और उसका चलने का स्पीड था 6 किलोमीटर. तो इसका है आंसर 3/6 kilometer and 1/2. तो इसका आंसर होगा 30 मिनट्स. ये आधा दौड़ा है और ये भी आधा है, तो
तो 1 घंटे में आधा मिनट होता है कि 60 होता है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो आधा घंटे में 30 मिनट्स होगा। इसका आंसर 30 मिनट। द odometer of a car is 57321.0 kilometer. When the clock shows the time as 8:30 a.m., the odometer is changed to 5736336.0 kilometer. At the time 8:50 a.m. M, the distance moving by the car is 20 minutes equal to 15 किलोमीटर। इसका आंसर, इसका 15 किलोमीटर कैसे होगा वो भी बोलते हैं। 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर होगा जैसे कि हम हाँ क्या लिखा था, 5 7 3 2 1, और ऊपर लिखेंगे हम इसको, इधर लिखेंगे 5 7 3 3 6, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि से मैं गलत हो गया। ये होगा 5, ये होगा 1 3 3 से जाएगा 0, ये भी आएगा 0, ये भी आएगा 0, तो आंसर बचा 15। तो इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर। The 15 kilometer is answer. Next, out of the following distance time graph, the graph that represent a truck at rest is the graph labeled. तो ये रेस्ट में यही होगा क्योंकि वो ट्रक हिल रहा में नहीं है, सीधा खड़ा है। In the given distance, a simple pendular, the time taken by the pop to moving from X to Z is T1 and Z to O is T2. The time period of people similarly period is, इसका आंसर ये होगा कि कैसे 4 ब्रैकेट T1 प्लस T2, इसका ये होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पर T1 और यहाँ से प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पर T2, फिर यहाँ पर तो सेंटर होगा, यहाँ पर काम नहीं करेगा, फिर यहाँ पर T1 प्लस T2, तो ये X और ये Y, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर से अब घूम के आएगा X में रुकेगा, तो इसका और एक बार यहाँ पर रहेगा T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2, तो इसका आंसर होगा T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2, इसका आंसर होगा 4 T1 T2, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर T1, तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, द S.I यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर देख लेते हैं। D. The answer of following question in right. A boy would to school and contain the speed 4 km and reach there in 30 minutes. Find the distance to school from his house. इसका आंसर है स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज 30 मिनट्स, इज इक्वल टू 0.5 आवर्स।
Now distance is speed is equal to speed multiplied by time. Distance is equal to 4 multiplied by 0.5. Distance is equal to 4 point multiplied by 5 is equal distance is equal to 2 किलोमीटर. ये टाइमिंग में पहुँचा वो. Next है the distance between two station is 216 km. A bus takes 4 hours to cover the distance. Calculate the average speed of the bus in kilometer hours. तो देखो इसका आंसर है डिस्टेंस इज इक्वल टू 216 किलोमीटर. टाइम टेक इज 4 hours. Now average speed is total distance covered, total time take. Average speed is 216 by 4. Average speed is 54 km per hour. The third question. Two cars and A, B stand at the same time from the same point are moving with average speed of 40 km and 50 km respectively in the same direction with average speed. Find how far will car B or B from car A after 3 hours. इसका आंसर है for car A average speed is equal to 40 km per hour and time taken is equal to 3 hours. Now the distance is speed A multiplied by time. Distance is 40 km. 40 multiplied by 3 is equal to 120 km. For car B average speed is 50 km per hour. Time taken is 3 hours. Now the distance is speed multiplied by time. Distance is 50 multiplied by 3 is equal to 150 km. Here the car B travel more distance. The car is 150 minus 120 is 30 km. Hence car B will be 30 km from car A. Next. For a car moving with a speed 40 km per hour from 15 km and there will be speed of 60 km per hour from the next 15 minutes. The total time distance covered by the car is 30 minutes. Answer distance is speed multiplied by time. Distance covered in first 15 minutes is 40 km multiplied by 15 minutes is equal to 40 km. 40 km per hour multiplied by 0.25 hours is 10 km. Distance covered in next 15 minutes is 60 km multiplied by 15 minutes is equal to 60 km multiplied by 0.25 meter. 0.25 meter 15 km. Therefore total distance is equal to 10 plus 15 is equal to 25 km. Next 15 question. Define the term periodic motion given in two examples of periodic motion that can be used to measure time. The answer is a motion that repeats itself after equal in the travel of the time is called a periodic motion. Motion of the hands of the clock and motion of the earth around the sun. ये एग्जाम्पल है. ये मोशन ऑफ द hands of the clocks, motion of the earth around the sun. एग्जाम्पल और ये है आंसर. नेक्स्ट है between uniform and non-uniform motion. Give of two example each. आंसर देखते हैं. See, uniform motion cover equal distance in equal returns of the time, while non-uniform motion covers unequal distance in equal interval of time.
Example, uniform motion of hand of a clock, non-uniform motion of a car in traffic. इसका एग्जाम्पल drawing the space क्या बोलते हैं इसको, अब यहाँ speed of distance time graph for a man waiting for a bus stays at one point and a bus stand. B, a man walking on a level, straight and narrow road with a constantly speed. आंसर ये ग्राफ है, मैंने बनाया है। ये डिजिटल मतलब वो ए वाला एक जगह में खड़ा है तो वो एक जगह में खड़ा होगा, इसलिए वो होगा एट रेस्ट। और ये जो है एट रेस्ट ए वाला एक जगह में खड़ा है, किधर इधर 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 नहीं हो रहा है, तो एक ही जगह में खड़ा है, वो होगा। और बी का होगा डिस्टेंस टाइम, वो भाग रहा है बी वाला, वो सीधा भाग रहा है, तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये ग्राफ मैंने दोनों बनाए, आप देख लेना। ये जो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।